हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। सो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले अबाउट ट्रिपल आईटी हैदराबाद, व्हाट ट्रिपल आईटी हैदराबाद इज एंड व्हाट इज बियॉन्ड द कोड। देखो, ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में यू नो दैट इट्स कंपेयर टू टॉप 7 आईआईटीज, राइट? कि तो अच्छी चीज़ है, बट एट द सेम टाइम ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में कुछ नेगेटिव चीज़ें भी मार्केट में है। लाइक ट्रिपल आईटी हैदराबाद में प्रेशर ज़्यादा होता है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद में सोशल लाइफ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, राइट? देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल्स हु आर कमिटिंग हियर एंड देयर। सो वी थॉट लेट्स मेक अ वीडियो रिगार्डिंग दिस, सो दैट स्टूडेंट्स को जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीडब्ल्यू एग्जाम के लिए या फिर ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए, दे शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस एंड उनका जो वाई होता है, वाई दिस कॉलेज, वो क्लियर हो। उसके लिए ये वीडियो है। सो लेट्स गेट इनटू दिस ट्रिपल आईटी हैदराबाद इन डिटेल इन दिस वीडियो। ओके, सो दिस इज व्हाट इट्स आर द ट्रिपल आईटी हैदराबाद एक्सपीरियंस कि बियॉन्ड द कोड क्या होता है, राइट? यू नो ट्रिपल आईटी हैदराबाद इज ऑल अबाउट कोडिंग, नॉट स्पेसिफिकली सी एस, बट इलेक्ट्रॉनिक्स भी ब्रांचेस है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉनिक साइड पे भी कोडिंग होती है एंड इट्स दिस इज वॉज ट्रिपल आईटी हैदराबाद इज नोन फॉर। अपार्ट फ्रॉम कोडिंग देयर इज वन थिंग जिसके लिए ट्रिपल आईटी हैदराबाद नोन है। दो स्टूडेंट्स हु नो कमेंट करिए एंड द वन हु गेट्स we'll pick a random one, actually not one, but we'll pick a random one and we will do a giveaway of books. So just comment karna ki what's that another thing apart from coding that triple IT Hyderabad is good at. Okay, the rumors is that we have life outside, we have no life outside the terminal is basically जब आप कोडिंग करते हो then you have a terminal shell, उसको terminal बोला जाता है, and the rumor is that they don't have any life outside the terminal. People think triple IT Hyderabad means coding, pressure, and isolation. This is what people think, but it is not, because we have been part of it, so we know much better. We'll let you know. Don't worry. Okay. So it's an intersection of an academics and a vibrant ecosystem. So academics so properly hey, and academics has to be there. देखो, don't go to a college where the social life is there. वहाँ पे अच्छे फेस्ट हो रहे हैं and all social life से campus बड़ा है. But what about academics? Academics है ही नहीं. Then what's the benefit of going to that college? Is it really worth it? The answer is no. But Triple IIT Hyderabad has a balance onto that. वो academics में भी strong है and ecosystem भी vibrant बना के दिए. उसके regarding detail में आगे देखते हैं, ठीक है? The academics are demanding, the deadlines are real. Of course, it's not like कि वहाँ deadline नहीं है. Deadline है. Deadline सारे colleges में होती है. टॉप 7 IITs में जाओगे, असाइनमेंट की डेडलाइन है तो है, एंड इट्स गुड डेडलाइन है, बिकॉज उसके डेडलाइन होने के कारण आप उस पर ज़्यादा फोकस करोगे, आप उसको टाइम से कवर करने का ट्राई करोगे, उसमें आपको डिसिप्लिन आती है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स बी क्लियर, दे कोड, दे डीबग, दे बिल्ड एंड दे डू रिसर्च. दिस थ्री थिंग, ये जो है ना, कोड, डीबग एंड बिल्ड, ये जनरल इंजीनियर्स करते हैं. But this is something different that Triple IT Hyderabad does, and Triple IT Hyderabad forces you to do that thing. And जो peer होता है ना, peer to peer learning, peer competition, that helps you to do this. Late nights are common here, but it's not just about the grades, it's about the building, right? This is very very important for all of you. कंपटीशन देखो एग्जिस्ट करती है, ऐसा नहीं है कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद में कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करती. ट्रिपल आईटी हैदराबाद में तगड़ी कंपटीशन एग्जिस्ट करती है एंड इट्स गुड फॉर ऑल ऑफ यू. जब भी कंपटीशन वहां पे है मीन्स कोलैबोरेशन जो है वो बेटर है, एंड द मोर द कोलैबोरेशन इज गेटिंग, आपका इन्वॉल्वमेंट होता है, आप उसमें एंगेज ज़्यादा होते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप देखो खुद से आप बुक से पढ़ोगे आपको नहीं समझ में आएगी, बट व्हाट इफ समवन टीचेस यू दैट, आपको लाइफ टाइम याद रहेगी, एंड दैट्स व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दिस कोलैबोरेटिव लर्निंग. लोग यहाँ पे कम होते हैं नॉर्मल कॉलेज से, अगर आप कंपेयर करोगे, लाइक कोई भी एनआईटीज या फिर आईआईटीज ले लो, तो यू विल हैव एन नंबर ऑफ, मतलब इतनी भीड़ होती है, लाइक लिटरली वेरी वेरी बहुत लोग होते हैं वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी पीछे वाली ब्रांचेस होती है एंड मल्टीपल कोर्सेज होते हैं. यहाँ पे प्रिटी मच क्लियर, दे हैव सीएस एंड दे हैव ईसी, प्रिटी मच सिंपल. सो लोग कम होते हैं बट कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट इज स्टिल देयर, ठीक है? यू आर सराउंडेड बाय द पीपल हु लव्स लर्निंग एज मच एज यू डू, राइट? सिलेक्शन यहाँ पे उनका ही होगा जो लर्निंग पे भरोसा रखते हैं और बिल्डिंग पे भरोसा रखते हैं. इट्स नॉट अबाउट मार्क्स एंड ऑल, दैट्स वाई इंटरव्यू बीच में आता है, ठीक है, यूजीडब्ल्यू एग्जाम में. एंड यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनके मार्क्स कम आए थे बट दे हैव शोन देयर कॉन्फिडेंस एंड इंटरेस्ट इन लर्निंग एंड उनको एडमिशन मिली. दिस हैज बीन द पास्ट है एंड ये आगे भी होता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं. सीनियर हेल्प्स द जूनियर navigate through the tough modules.
Friends study together to crack the complex problem, and that's why this is why बहुत सारे स्टार्टअप्स जो है देखिए ट्रिपल आईटी हैदराबाद से स्टार्ट हुए हैं, कुछ इंक्यूबेट भी हुए हैं एंड कुछ के फाउंडर्स आर फ्रॉम ट्रिपल आईटी हैदराबाद, सो दैट्स व्हाट लाइक एनवायरमेंट से बन जाता है. Students just learn history, they make it, and that's what is the thing. It's not only about Java, Spring, React, या फिर AI, machine learning, AI, agentic AI, बहुत सारी चीजें हैं. It's not about that. It's about the upcoming thing. आगे क्या आने वाला है. This is are the thing that they are going to do. This is why the research come. बहुत सारे कॉलेज में research कीवर्ड पे फोकस किया ही नहीं जाता है. And Triple IT हैदराबाद is the only institute जो कि सिर्फ research कीवर्ड पे build हुई है. So think of it. So that's a very very awesome thing. पब्लिशिंग पेपर ऑफ कोर्स जहाँ जहाँ पे रिसर्च होता है वहाँ पे पब्लिशिंग पेपर्स होते ही है. एंड स्टार्टअप कहाँ से आते हैं, न्यू आइडियाज कहाँ से आते हैं, रिसर्च से. रिसर्च इज अ पार्ट ऑफ डेली लाइफ हियर, नॉट एन आफ्टर थॉट. लर्निंग लीव्स द क्लास. रिसर्च यहाँ पे मैंडेटरी है एंड रिसर्च यहाँ पे आप करते हो बिकॉज जब आप एंटर करोगे यू विल थिंक, यू विल हैव दैट एटमोसफियर अराउंड यू रिसर्च वाला. सो सारे लोग रिसर्च वाले मेंटालिटी से आते हैं, तो यू विल एंड अप गेटिंग इन्वॉल्व इन दैट रिसर्च एंड यू विल एंड अप गेटिंग इंटरेस्टेड. तो आपका इंटरेस्ट बिल्ड होता है. ये तो ठीक हो गया, ये तो बहुत लोग जानते हैं, बट व्हाट्स नॉट द अनसीन साइड. द कोडर्स परफॉर्म ऑन द स्टेज एंड द रिसर्चर्स पेंट. यहाँ पे भी सारे इवेंट्स होते हैं, यहाँ पे भी जो सोशल लाइफ होती है वो एंजॉय की जाती है. एंड थिंक ऑफ इट, 4 साल का कोर्स है, आपका 5 साल का कोर्स है. यू आर लकी इनफ टू गेट दैट वन एक्स्ट्रा कॉलेज लाइफ, राइट. बिकॉज देखो कॉलेज बैचलर्स लाइफ होती है ना, कॉलेज छोड़ने के बाद लाइक वी नो दिस थिंग्स. कॉलेज छोड़ने के बाद यू डोंट हैव एन ऑप्शन टू गो बैक इन टू दैट लाइफ, राइट. एंड दैट लाइफ इज रियली एंजॉयिंग. सो यू हैव दैट 1 ईयर एक्स्ट्रा. अगर आप यूजीडब्ल्यू डुअल लेगा, मतलब डुअल जो डिग्री वाला कोर्स होता है उसमें अगर इनरोल करते हो तो आपको 5 साल का कोर्स होता है. प्रीवियस वीडियो में अपने डिस्कस किया है. सो यू गेट 1 ईयर एक्स्ट्रा, and that 1 year extra has a sort of different experience and different learnings altogether. So Triple IT Hyderabad is known for the coding, but they are also known for the social, right? उनके भी बहुत सारे outings and all events, multiple tech fest हो गया, music fest हो गया, clubs हो गया, technical committee हो गया, cultural committee हो गया, all these are part of this. So we have been part of LACT. We know I can't. I'm not sure like how to express all these feelings, but trust me, guys, this is something awesome. Right? You'll enjoy. You'll enjoy. Apart from coding, there are n number of things जो कि वहाँ होती है. Right? You don't lose yourself here. You discover new version of yourself. And that's what is the real meaning of college. देखो आप बैचलर्स के लिए कोई भी कॉलेज में जाओगे, आई एम नॉट सेइंग अबाउट ट्रिपल आईटी हैदराबाद. आप देखो आप स्कूल लाइफ में थे, आपको अपनी कोचिंग लाइफ में थे, बट यू आर लाइक यू आर स्ट्रगलिंग ऑन टू योर, आप बोले हार्ड स्किल्स है ना, हार्ड स्किल्स थे उस पर आप कवर कर रहे थे, बट सॉफ्ट स्किल्स पे आप कवर आपने कभी फोकस किया ही नहीं होगा. And this is the place where you focus on your soft skill, right? The cultural clubs helps you to build your soft skill, communication, and those are really matter a lot, really matter a lot. बाकी इंटरेस्ट हो गया, गेम्स हो गया, टेक्निकल क्लब्स हो गया, कुछ बिल्ड करना हो गया, दिस इज वेयर द कॉलेज कम्स इनटू पिक्चर एंड दे डिस्कवर न्यू वर्जन ऑफ योरसेल्फ, राइट. सो जैसे भी जो भी आप अगर देखोगे ना, तो बच्चा जैसे फर्स्ट ईयर में आता है एंड लास्ट फोर्थ ईयर या फिर फाइनल ईयर फिफ्थ ईयर में जो पास आउट होता है, यू सी अ ड्रास्टिक चेंज इन दैट. एंड दैट्स व्हाट is the importance of a college, and triple IT Hyderabad is very good at it. And after that, yeah, of course, hostels are there, then hostel lights and all things are there. Yeah, people do enjoy and people do work. It's not only about enjoying. Enjoy भी करते हैं, end sem है, mid sem है, prepare कर रहे हैं, night out कर रहे हैं, everything they do. Rooms may be small, but the memories are you. And literally saying, जो भी आप बच्चों ये वीडियो देख रहे हो ना, you will see, you will feel this, you will have feeling about this sentence after you graduate, right? You will have literally feelings for this. Rooms may be small but the memories very good. You will end up with n number of memories जो कि आप कभी build कर ही नहीं पाओगे life में, and those will stay forever. And that's what is a life of bachelors, right? That's the life of a college life, you can say, right? And hostel life is where everything connects. It's the late night conversation, midnight, birthday celebration, shared stress, GPL, and बहुत सारी चीजें होती है. Like I exactly can't remember like सारे flashbacks आ रहे हैं, but still that's really something new you are going to experience, and those are life learning moments for you. Our life runs 24/7 on this campus. Morning start होता है, आपकी classes होती है, labs होता है, evening में you belong to the friend, connections establish कर रहे हो, सबकी सारी सारी चीजें, ideas are built कर रहे हो नाइट में. एंड दैट्स व्हाट ट्रिपल आईटी हैदराबाद इज. balance is not imposed, it is created, and that's what triple IT Hyderabad focuses on. Sport में they are good at research, they are good at everything. अगर आप कॉन्फ्रेंस में देखोगे ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बच्चे देखोगे,
आप कोड फोर्सेस पे जाइए, आपको ट्रिपल आई टी हैदराबाद के बच्चे देंगे। आप कॉन्टेस्ट देखो, आपको ट्रिपल आई टी हैदराबाद के बच्चे मिलेंगे, राइट। कम बच्चे हैं इनके पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है आईआईटी के कंपैरिजन में, स्टिल दे आर कम्पिटिटिव। यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंस पे ट्रिपल आई टी हैदराबाद के बच्चे आपको दिखेंगे, क्योंकि रिसर्च पेपर है उसमें ट्रिपल आई टी हैदराबाद के बच्चे दिखेंगे। And apart from this, they have a very awesome life that they also play, but लोग जानते नहीं है, बिकॉज देखो इट्स ऑल अबाउट पीआर गेम एज वेल, राइट। जैसे कोई बड़ा कॉलेज है जिसमें 8,000 बच्चे हैं, अब 8,000 बच्चे हैं, दे वो उनकी पोस्ट को रीशेयर करते हैं तो रीच अपने आप बढ़ जाती है। बट दैट्स नॉट द केस विद ट्रिपल आई टी हैदराबाद। क्राउड यहाँ पे कम है बट क्वालिटी वाली है। सो वो क्राउड या फिर जो बोल रहे हो ना कि लाइक वायरल हो रहे हैं, वो सीन अभी ट्रिपल आई टी हैदराबाद में नहीं हुआ है। बट ठीक है, दैट्स कंप्लीटली फाइन, वायरल नहीं हो रहा, बट दिस गाइज आर ऑल एंजॉइंग एंड you can be a part of it. The only thing that you need to do is struggle, right? You put in your effort, you put in your effort for UGEE exam, sincerely prepare करो, sincerely exams को दो, mocks को दो, and you will end up at triple IT Hyderabad, and that will be a like life changing moment. आपकी life change हो जाएगी completely. This is not easy college, frankly speaking it's not a easy college. आपको यहाँ पे assignments रहेगी, deadlines रहेगी, but the thing is टाइम मैनेजमेंट मैटर्स, ये आप सीख जाओगे। टाइम की बात है, आप सीख जाओगे। अभी माइट भी लग रहा होगा इट्स डिफिकल्ट, बट नो इट्स नॉट डिफिकल्ट। इफ यू विल ट्राई, इफ यू विल पुट इन योर एफर्ट्स, इट विल बी इजी फॉर यू। प्रेशर एग्जिस्ट ऑफ कोर्स, देयर विल बी फ्यू टफ डेज, बट बट द एंड रिजल्ट इज गुड, द एंड रिजल्ट इज एंजॉय एंड यू विल एंजॉय। growth comes from challenges, so challenges hai, but the growth will come only when there are challenges, so that's why you all should face the challenges. ठीक है। एंड ट्रिपल आई टी हैदराबाद शिफ्ट्स पीपल, नॉट जस्ट सीवी। ट्रिपल आई टी बस सीवी में ट्रिपल आई टी हैदराबाद कॉलेज ऐड करने पे नहीं है, दे हैव देयर गुड एलुमना कनेक्ट। आपको आगे जाके एलुमना हेल्प करते हैं मल्टीपल पोजीशंस पे, हायर पोजीशंस पे, हेड ऑफ पे, वीपी हो गया, डायरेक्टर हो गया, बड़ी बड़ी लाइक एमएनसीज पे दे आर एट अ स्टैंडिंग स्टेज है, वहाँ पे आपको हेल्प हो जाती है। मल्टीपल थिंग्स है, जॉब में है, आपको इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं, स्टार्टअप में है, तो बहुत सारी चीज़ें लाइक दैट ट्रिपल आई टी हैदराबाद हेल्प्स यू। इट्स टू फार एंड टू इम्पोर्टेंट दैन द सी। ठीक है। सो बहुत बिगर क्वेश्चन, इज दिस प्लेस फॉर यू, ये आपके लिए जगह है क्या? अगर आपको स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स चाहिए देन आपके लिए ये जगह है। आपको सच में पढ़ना है, आप यू आर इंटरेस्टेड, आपको सपोर्टिव पीयर्स चाहिए, आपके दोस्त सपोर्टिव चाहिए, यू आर हियर। आप किसी को सपोर्ट करना चाहते हो देन यू कम हियर। अ लाइफ बियॉन्ड क्लासरूम, ऑफ कोर्स इट्स नॉट ओनली अबाउट क्लासरूम। क्लासरूम के बाहर आपको सोशल एक्टिविटीज करने में मजा आता है, कुछ बनाने में मजा आता है। सबका जॉनर है, किसी को ड्रामा में मजा आता है, किसी को म्यूजिक में मजा आता है, किसी को डांस में मजा आता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ऑल दोस थिंग्स, ट्रिपल आई टी हैदराबाद इज अ राइट प्लेस फॉर यू। And that's it. So more than code is what we have discussed in this video. अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में बता दो आपके डाउट्स, एंड कोई नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो डू लेट अस नो, वी विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन टू दैट टॉपिक। एंड दैट्स इट। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, मेहनत करो, देयर इज नो ऑप्शन, देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर द एफर्ट। इवन दो प्लान बी इज देयर, दैट्स एन अल्टरनेटिव फॉर जेई, बट एफर्ट्स के लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो एफर्ट लगाओ, प्रिपेयर करो, मॉक जो है ट्रिपल आई प्रॉपरली सिंसियर मॉक अटेम्प्ट करो, लिटरली चाहिए। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। So just trust the process, and yeah, you will end up with a good results. And that's it. Thank you. All the very best. Let's crack triple IT Hyderabad this year too. Thank you. Bye bye.